हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जेआईबी सीआईबी वाला पे। जहाँ पे आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन बीएफएम। और बीएफएम में जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, आज का टॉपिक रहेगा ऑपरेशनल रिस्क। ओके, सो मॉड्यूल बी जिसको हम लोग आपका गो थ्रू कर रहे हैं, एंड मॉड्यूल डी बी इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट की 4 रिस्क, जिसमें से चौथा आज जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, विच इज ऑपरेशनल रिस्क। सो विल प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड केसेस बेस्ड ऑन operational risk. So if you have any query, you can ask into the comment section, and you can like anything, if you want to ask about these particular things, you can mention into the comment section, right? So without any further delay, we will start this session with very first question on your screen, guys. तो पहला क्वेश्चन आपका, according to Basel committee, which of the following best describe operational risk? As I told you, today we are going to talk about operational risk. So like whenever we talk about operational risk ना, it can be cause based and event based. ठीक है, दो तरीके से BCBS ने इसको डिफाइन किया है. सो बेसिकली ऑपरेशन से रिलेट करता हुआ, या जैसे कोई भी ऐसी चीज जो ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर रही है, उसकी वजह से जो लॉसेज हो रहे हैं. ठीक है, सो ये किसी भी पार्ट में आपका हो सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इंटरनल, but there are some external events also which can be a major cause for the operational risk, right? So the risk arising from inadequate internal processes, people and system, or from external events. ठीक है, तो पहला ही आपका जो पॉइंट है, so this definition is generally given by BCBS, जहां पे उसने इस तरीके से उसको आपका डिफाइन किया. ठीक है, सो ऑपरेशनल रिस्क इज द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट इंटरनल प्रोसेस, जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनमें कुछ फेलियर्स होता है. पीपल व्हेन दे वेंट ऑन स्ट्राइक और सम अदर थिंग्स. सिस्टम जो हम लोग यूज करें उसका फेलियर्स, और सम एक्सटर्नल रीजंस और फ्रॉड्स और अदर्स. ठीक है, सो ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. करेक्ट. So operational risk result from the possibility of suffering losses as a result of flaws or failures in an organization, internal procedures, employee decisions, technological infrastructure and all. So ये कुछ major areas आपका जो यहाँ पे निकल के आते हैं. ठीक है, next question guys. Which of the following is a challenge in operational risk measurement according to Basel 2 as well as Basel 3? अब देखो क्या होता है, लाइक सपोज दैट लाइक इट इज वेरी चैलेंजिंग टू measure or to quantify operational risk. Reason being, like suppose that there was a disturbance in internet for 3 hours, or like there was an external events through by which like we face some problem in banking business or operations, or suppose that employee went on strike for 2 days. तो ऐसे बहुत सारे एरियाज आपका जो निकल के आते हैं. ठीक है, सो इट इज वेरी हार्ड टू क्वांटिफाई दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई पैटर्न आपका फॉलो नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसी चीजें नहीं हो रही है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आपके आ सकते हैं. ठीक है, अनुप्रीता मैम वेरी गुड इवनिंग, हाउ यू? सो आपने डी बोला है. सो प्रिडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर, अनप्रिडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर, सो दिस विल नॉट. स्टैटिस्टिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, abnormal distributions, large historical loss database is not available. ठीक है, so difficulty in estimating operational losses will be right answer for this particular one. Correct. So Basel 2 and 3 claim that one of the difficulties in measuring operational risk is difficulty in assessing operational losses. The most challenging risk measurement is operational risk. Operational risk behavior differs from the certain other form of risk, such as market or credit risk, in that does not confirm a statistically normal distribution pattern. This implies that operational losses are difficult to forecast using conventional statistic techniques. ठीक है, जैसे अदर्स में आपका होता है ना, like let's suppose that if there is a credit risk, so we do have that, like that is kind of expected one. ठीक है, जैसे अगर किसी का क्रेडिट वर्दिनेस उसमें वीकनेस आ रही है, so accordingly we can make provisions or we can plan some actions and all, but यहाँ पे वो चीजें ना थोड़ा सा टफ हो जाती हैं. ठीक है, they are random in nature also, right? So next one,
why is a real time concern considered as an important aspect of integrated risk management? ये सभी में काम करता है, बट ऑपरेशनल रिस्क के अंदर भी, लाइक सपोज दैट इफ एम्प्लॉय वेंट ऑन स्ट्राइक, अब ऐसा नहीं कि उनको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. सो यू हैव टू लिसन देम. और तो वी नीड अ मैनेजर. सो इट्स लाइक वो कहीं ना कहीं जो मैनेजरियल रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो दे नीड टू नो अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, दे नीड टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है एंड ऑल, एंड व्हाट कैन बी द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर वन. उसके ऊपर जो जितना अर्ली एक्शन होगा ना उतना ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है. तो जो प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम है या बीमारी जो अभी छोटी है, अर्ली स्टेज में उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो इट विल उसका कॉस्ट थोड़ा सा कम होगा, प्राइसिंग विल बी लेसर साइड, राइट. अगर आप उसको ओपन छोड़ देंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है. सो रियल टाइम कंसर्न अलाउ फॉर इमीडिएट एक्शन इन रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइड रिस्क, enhancing risk mitigation efforts. तो पहला बिल्कुल सही है. रियल टाइम कंसर्न हेल्प फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन comply with the regulatory demands are fixed. ये आपका नहीं होगा क्योंकि because they are predetermined, ठीक है. रियल टाइम कंसर्न ensure that risk measurement is accurate and consistent across various. No, real time concern reduce the cultural limitations. No, so A will be perfect answer for this particular one. A will be right answer, Anuprita. So real time concern allow immediate action in response to identified risk. ठीक है. सो कौन सा रिस्क आया उसको आइडेंटिफाई करना, खासकर ऑपरेशनल रिस्क के अंदर. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है. सो दैट वन. इनहेंसिंग रिस्क मिटिगेशन एफर्ट्स ऑल्सो. तो व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन, और क्या हमारे पास अवेलेबल है वो. व्हाई नॉट डी. रियल टाइम कंसर्न रिड्यूस द कल्चरल लिमिटेशंस एंड बिजनेस यूनिट बाउंड्रीज दैट हिंडर रिस्क डेटा कलेक्शन. सो दैट देयर इज नो रेफरेंस विद दैट पर्टिकुलर वन. करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. So real-time awareness is essential to integrate risk management because it enables business to react quickly to new danger. Organization may act right away to prevent any negative effect by continuously monitoring and analyzing risk in real time. The efficiency of risk mitigation techniques is increased by the proactive approach, assisting the company in maintaining stability and resilience in a rapidly changing environment, right? Understood? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं. A bank is in the process of implementing integrated risk management and is considering the role of CRO, that is Chief Risk Officer, which was advised by RBI or it become effective from 2017, जहाँ से mandate किया गया कि जो risk management committee है that will be governed by CRO, Chief Risk Officer, right? The bank is unsure about the reporting structure of CRO according to RBI guidelines. Who should? तो ये रोल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो जो CRO का रिपोर्टिंग है दैट डायरेक्टली बिलोंग्स टू MD और चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक, ठीक है, जो एपेक्स पोस्ट होती है उन पे. सो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक. सो D विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है. सो RBI हैज एडवाइज अ बैंक वाइड गाइडलाइंस of April 17 as under. So bank should appoint CRO, Chief Risk Officer. Bank should lay down a board approval policy clearly defining the role and responsibilities of CRO. CRO has to control and coordinate the functions of risk management department of the bank. Because of the importance of RBI give to this post, so RBI they directly need to report the managing directors or चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो जिनको नहीं पता था प्लीज ध्यान रखिएगा, चीफ रिस्क ऑफिसर, उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दिस वन, राइट. अनुप्रीता मैम, अंडरस्टूड. अदर ऑल्सो दोज हु आर वाचिंग लाइव प्लीज डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू हैव सम क्वेरीज प्लीज डू आस्क. ठीक है, नेक्स्ट वन. Which of the following is not a cause-based classification of operational risk according to third consultative papers of Basel II? ठीक है. So cause-based events आपका नहीं. देखो Basel II was like when they released this documents ना, उन्होंने बोला कि जो operational risk है that is more toward to internal activities आपका, ठीक है. So internal activities से आपका ये ज़्यादा निकल के आता है. That was the point, ठीक है. सो अब कॉज बेस्ड आपका इट कैन बी पीपल ओरिएंटेड, नेग्लिजेंस, इनकम्पिटेंस, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, इंटीग्रेटेड दिस.
प्रोसेस ओरिएंटेड आपका हो सकता है ऑपरेशनल, सो दिस इज ट्रू, ठीक है, ये भी आपका एक्सटर्नल फ्रॉड, ठीक है, सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस वन. External fraud loss due to the act intended to defraud, misappropriate property or circumvent the law by third party, which is external one. Technology, which is again internal one. तो ये तीनों क्या है, internal है. This is internal one. This is internal cause. This is internal. This is internal cause. This is internal cause. This is external one, right? So this is the one. So what will be your correct answer C in this particular case? ठीक है, आज अनुप्रिता मैम के सारे आंसर गलत जा रहे हैं. No worries. You will remember those particular thing. ठीक है. तो देखो क्या होता है, कॉज बेस एंड इवेंट बेस, ठीक है. सो दो तरीके से आपके ऑपरेशनल रिस्क अराइज होते हैं. कॉज बेस दे आर मोर टुवर्ड टू इंटरनल वन, ठीक है, वो आपका इंटरनल, जो आपके इंटरनल में क्या आएगा, जैसे पीपल ओरिएंटेड, आपका टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, टेक्नोलॉजी बैंक की खुद की होती है ना, और आपका प्रोसेस ओरिएंटेड. एक्सटर्नल वन इज लाइक दैट इज इवेंट बेस्ड, कोई एक्सटर्नल इवेंट्स आपका जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम आपका हुआ है, ठीक है. So the third consultative paper of Basel II classifies operational risk into event-based categories. External fraud refer to losses caused by third party who intentionally commit fraud. This. Right. Next one, guys. Principle 5 of the revised principle of operational risk management emphasizes the responsibility of dash in establishing, approving, and periodically reviewing the framework of operational risk management, ठीक है. सो जो आपका प्रिंसिपल 5 है, जहाँ पे कहीं ना कहीं जो ऑपरेशनल रिस्क के संबंध में देयर वर प्रिंसिपल्स, तो जिसमें आपका इसमें जो राइट्स आपका डिव्यूट किए गए किसको, ये जो काम है आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, स्टेब्लिशिंग, अप्रूविंग एंड पीरियडिकली रिव्यूइंग द फ्रेमवर्क ऑफ ऑपरेशनल रिस्क. इट बिलोंग्स टू सीनियर मैनेजमेंट. ओके, सो सीनियर मैनेजमेंट मीन्स ऑप्शन ए will be correct answer for this particular question, right? So principle 5 which is related to senior management. अब मैंने आपको ये बात कल भी बोली थी कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट है इसके संबंध में BCBS के द्वारा बहुत सारे प्रिंसिपल्स आपके रिलीज किए गए हैं. सो यू हैव टू हैव गो थ्रू दीज पर्टिकुलर प्रिंसिपल, ठीक है, आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो तभी आपको तभी आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे, ठीक है. सो प्लीज गो थ्रू दोज पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स. अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं समझ में आता है, सो यू कैन कनेक्ट विद अस, राइट. सो शुड डेवलप by the approval of board of directors a clear, effective and robust governance structure with well-defined, transparent and consistent line of responsibility. Senior management is responsible for consistently implementing and maintaining throughout the organizational policies, process and system for managing operational risk in all of the bank's material, product, activities, process, system and others also, right. Next one. Which of the following is not a responsibility of operational risk management committee, ठीक है. तो हमने जब फ्रेमवर्क समझा था, तो फ्रेमवर्क इज लाइक समथिंग लाइक दिस. तो जो जिसमें रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है आपका, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से, जैसे आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, BODs, देन हमारे पास एल्को है, ठीक है, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी, देन वी हैव रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. अंडर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी वी हैव ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी लाइक अ सब ग्रुप, वैसे ही अदर के लिए भी आपका, ठीक है. तो ये तो इवेंचुअली जो ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही हैं, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स या अदर्स, वो सारी चीज़ें दे जनरली डिजाइन दीज पर्टिकुलर वन, ठीक है, ये इनको डिजाइन करेंगे, ठीक है. देन दे विल सेंड इट टू रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, देन दे विल पास इट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये अप्रूव करेंगे, देन इट विल बी गेट इम्प्लीमेंटेड थ्रू with the help of senior managers or other departments. Senior managers, senior management, they'll help them to frame that particular guidelines and all. ठीक है, इस तरीके से आपका काम चलेगा. So identifying operational risk, formulating policies, procedures, setting guidelines for risk assessment and measurement, overseeing the day-to-day execution. No, so D आपका नहीं होगा, ठीक है. So D is जहाँ पे जो डे टू डे ऑपरेशन आपका हो रहा है, जैसे जो गाइडलाइन, जो प्रोसीजर बने हैं, उनका सही पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट इज नॉट द रोल ऑफ दिस वन, ठीक है. ये इवन आपका सीनियर मैनेजमेंट से भी ऊपर का टीम है, तो दे आर नॉट बाउंड टू डू दिस, ठीक है. उनका ये काम नहीं है कि वो सही ढंग से इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो आगे जो हायरार्की है उसके द्वारा उसको देखा जाएगा. सो डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है.
So the Operational Risk Management Committee is in charge of identifying, evaluating, managing operational hazards inside the company. It is essential for developing policies, establishing standards, and making sure the operational risk management framework is put into practices. ठीक है, अब वो प्रैक्टिस तक वहाँ की हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, दैट इज डन, बट वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है अदर्स ये वो लोग नहीं देखेंगे. रिस्क मैनेजमेंट Operational Risk Management Committee place more emphasis on strategic monitoring and decision making rather than this particular one. Correct? चलो आगे बढ़ते हैं. Why the quantifying operational risk challenging compared to other type of risk? बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर. ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है. I hope you will be able to answer this question. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आपका ऑपरेशनल रिस्क को क्वांटिफाई करना इज वेरी टफ बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी लाइक जैसे पास्ट कोई आपका सेम रेगुलर पैटर्न नहीं है या फिर आपका डेटा अवेलेबल नहीं है या जैसे बहुत सारे चैलेंजेस. ऑपरेशनल रिस्क इवेंट्स आर लेस फ्रीक्वेंट देन अदर टाइप. नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं. ऑपरेशनल रिस्क मैनेजर्स आर नॉट, मैनेजर्स की गलती नहीं है इसमें. ऑपरेशनल रिस्क डेटा इज नॉट कलेक्टेड प्रॉपरली. Operational risk does not follow statistically normal distribution pattern. Okay, so this is the major reason for this particular one. ठीक है, yes, हाँ बिल्कुल सही. So D will be correct answer for this particular one. Correct. So operational risk does not have same statistical trait as market or credit risk, which often exhibit a statistical normal distribution pattern, making it more difficult to evaluate when compared to other categories of risk. Right, next one. What is the maximum percentage of risk mitigation allowed under insurance for a bank using advanced measurement approach for operational risk calculation? ठीक है, so now this is one of the most famous method to calculate operational risk. तो जब हम लोग ऑपरेशनल रिस्क को क्वांटिफाई करते हैं तो उसके लिए एएमए अप्रोच को आपका बैंक्स के द्वारा यूज किया जाता है. ठीक है, अब इसमें जो एएमए अप्रोच के अंदर आपका अगर वो लाइक दैट कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क, जब इस चीज का कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं तो उसमें इंश्योरेंस का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो कितना दिखा सकते हैं. जैसे सपोज दैट द ऑपरेशनल रिस्क इज 100 करोड़ रुपीज, ऐसा कुछ अमाउंट आपका निकल के आ रहा है. तो इसमें से आप कितना मैक्सिमम वैल्यू को शो कर सकते हैं कि इट इज इंश्योर्ड. सो योर आंसर विल बी एट अ मैक्स ऑफ 20%. ठीक है, सो जो भी आपका कैपिटल चार्ज है फॉर ऑपरेशनल रिस्क इट कैन बी मैक्सिमम बाय 20% ऑफ इंश्योरेंस. अदर्स आपको वैसे बफर्स मेंटेन करने होंगे. सो सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. ठीक है, सो अ बैंक इज अलाउड बाय एएमए to take into accounts the risk mitigation effect insurance when calculating the operational risk needed to meet regulatory minimum capital requirements. The amount to which insurance can be taken into accounts for risk mitigation has a cap. So a maximum 20% of the total operational risk capital charge determined by the AMA may be recognized as insurance mitigation. In otherwise, while calculating the capital charge for operational risk, a bank can use insurance to mitigate up to 20% of operational risk exposures. Beyond this point, any additional risk mitigation will not be taken into accounts for to determining this particular one. ठीक है, so again please ध्यान रखिएगा, static, this is kind of static point, but उसका जो uses है वो इस तरीके से. Next one. Which of the following is emphasis by Basel III operational risk management practices? So Basel III आपका जब आया ना, so 2 was not that much clear about operational risk, but हाँ 3 में जब उन्होंने गाइडलाइंस रिलीज किए तो दे एडवाइज टू बैंक की you should work more toward the qualitative solutions rather than the quantitative solutions. Okay, तो पहले हम लोग जैसे क्या करते थे सिंपली आपका कि जो क्वांटिटेटिव जो नंबर्स हैं उनको खत्म करने के लिए ऊपर काम करते हैं. उन्होंने बोला कि यार आप ये छोटी छोटी चीजें मत करो, गो फॉर परमानेंट सोल्यूशन. परमानेंट सोल्यूशन कहाँ से आएगा? विद क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स. ठीक है, सो ऑप्शन डी दैट इज योर क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स. ठीक है, so Basel III operational risk management procedure place a strong emphasis on compliances with high criteria, sound practice for management of operational risk,
paper outline these qualities requirements. According to the text, adhering to the best practices is a requirement of Basel 3, and these principles take on special significance when applied to bank. This implies that rather than concentrating just on meeting quantitative criteria, or quick capital accumulations, firm, notably banks, are required to adhere the establishment of qualitative rules and guidelines for the कंट्रोलिंग ऑपरेशनल रिस्क आपका, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, बेसल 3 के अंदर आपका ये चीज जहां पे निकाला गया। अ बैंक फॉल अंडर बीआई बकेट एंड रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एनुअल लॉस डेटा फॉर ऑपरेशनल रिस्क। सो बीआई बकेट के अंदर आपका जो भी 4 बकेट्स होते हैं उसमें अगर कोई आता है, तो इफ देयर इज अ बैंक हु इज पार्ट ऑफ बीआई बकेट, तो हाउएवर दे आर अनसर्टेन अबाउट द मिनिमम थ्रेशोल्ड, सो इट इज 1 लाख रुपीज इंक्लूडिंग लॉस इवेंट्स इन द डेटा कलेक्शन। तो जो लॉस इवेंट डेटा आपके हैं उसके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सो एज पर द गाइडलाइंस इट शुड बी 1 लाख और अदर्स, ठीक है। Okay, so what is the minimum threshold for including a loss data events as per RBI? So it is 1 lakh rupees, ठीक है, 1 लाख रुपए का। So minimum loss data standard have been outlined in the RBI guidelines. National Supervisor RBI should review the quality of bank loss data periodically. Bank must have process to independently review to comprehensive and accuracy of loss data. Critical loss data file must be include the data, the dates of occurrence, their disclosures and accounting gross losses, recoveries, and descriptive information about drivers or causes. The minimum threshold for including loss events in the data collection and calculation of average annual loss is 1 lakh rupees, ठीक है। अंकित सर क्या कह रहे हैं आपका? हाँ अंकित सर, लाइक देर इज नो एज नो पर्सनल कोड एंड ऑल, ठीक है। तो ऐसा कुछ कोई मतलब कोड वोड नहीं है। तो यू कैन विजिट pw.live, ठीक है। आप वहाँ पे अगर आप JAIIB CAIIB कैटेगरी के अंदर जाएंगे तो वॉट एवर दैट प्राइस इज ना, सो उसी पे आपको मिल जाएगा। एंड आई वुड रिकमेंड कि वेट फॉर 2-3 डेज। सो इंडिपेंडेंस डे आपका उस पर कुछ ना कुछ सेल आपका जरूर होगा, ठीक है। तो आई एम लीकिंग दिस डेटा, बट हाँ यू कैन वेट फॉर 2-3 डेज, यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग, ओके। चलो, तो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको JAIIB CAIIB के अंदर कोई भी ऐसा डेटा आपको चाहिए होता है, if you need some notes or some set of questions or PYQs and all, so you can connect me over there, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं, और जिस पे हम लोग आपका वी कैन हैव कन्वर्सेशंस, और अगर आपके जो भी डाउट्स एंड अदर्स होंगे उनको हम लोग आपका सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ अंकित सर, ठीक है, आपको मैंने चीज़ बताई है। सो वेट टिल 24 आई गेस, फ्रॉम 24 ऑनवर्ड्स दे विल डू समथिंग, राइट। चलो, सो आज के लिए इतना ही करते हैं गाइस। आई विल सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। सो हम लोग आपका अब मिलेंगे ट्यूसडे को, और ट्यूसडे को एक और टॉपिक हम लोग इसका मतलब मॉड्यूल बी के अलग अलग टॉपिक को हम लोग प्रैक्टिस करें। वंस वी आर डन विद all the topics, then I'll come up with mixed question based on module B only, right? चलो, तो आप लोगों का वीकेंड आज खत्म होता है, मेरा कल से शुरू होता है, ठीक है। हमारा मंडे छुट्टी रहता है आपका। सो आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो, तो जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से एक टॉपिक, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड अदर्स। एंड दोज हु आर वाचिंग इन रिकॉर्डेड, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, सो यू कैन मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन, ओके। चलो, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, गुड नाइट, थैंक यू।